morning to everyone. Today, the 23rd of March 2023, we are going to announce to all the diabetic patients all over the world who are suffering for several years and without any solution. They were undergoing these issues, and with all medications and interventions of modern science or any other system of medicines, still the results have not been proved. But we proudly announce from Sri Paripurna Sanatana Charitable Trust, Sri Paripurna Sanatana Ayurveda Medical Hospital, College and Research Center, as well as the Third Eye Foundation, Dr. DR.AWADHESH Pandey, who is with us. And because of his support and guidance, we have started our diabetes camp from 22nd of March, and the very day evening he has established that diabetes can be reversed. And in these connections, some 40 patients have joined for this camp, and it was established in the evening itself their parameters were completely under the normal range. And today also they are undergoing the very same treatment what it was been proposed, and protocol has been maintained by Dr. DR.AWADHESH ji, and tomorrow also it will be concluded. And finally we will give all the reports related to this, how your diabetics can be reversed in a natural process. So it is an example to the world that they can follow these simple methods in their lifestyle, and they can change the complete diabetes into a non-diabetic case. So we request all the patients from all over the world kindly go through our websites as well as all the social media apps to get all the informations how they can get well soon. And we want that it should not only be a Swachh Bharat, it should be a Swasth Bharat. Not only Swasth Bharat, it should be completely, all the world should be free from the ailments. That's what our aim is, and we are into this research, and all our team are here, and very shortly we are going to expand our centers on all the locations of India as well as abroad. So it is a great pleasure. Now I would like that Dr. DR.AWADHESH Pandey ji should highlight on this. Thank you, sir. I am honored to be here in Sri Paripurna, in Swamiji's guidance. We have his blessings. I know that even if we are not there, we have his blessings with us. We proposed to take up 20 patients, 40 turned up, and these patients, all of them without any exception, are drug free in 1 day time. Today is the second day when all are undergoing, they are very happy, they are detoxed, their blood sugar is normal. A few of them, 3 or 4, have a little higher sugar, but that is required because these people have been on insulin injection, and purposefully their blood sugar is kept on a higher level, because if it plunges down, it can become an emergency. So we are doing it very scientifically and all documenting all data. To cut the long story short, we are here to sign an agreement between IKYA Foundation, which holds Sri Paripurna, and the Third Eye, and we are getting in collaboration to. The reason is our aim is very similar. Not only Swachh Bharat, Swasth Bharat and Swasth Vishwa. We should not forget, we are Vedic people. Sarve bhavantu sukhira, sarve santu niramaya. We are people who will heal the world. We want to start it like that, and you'll be surprised. Our patients, we never tell them to come for a follow-up. We tell them you should never come back to us.
you should be at home, you should be healthy, you should be pursuing your life, pursuing your family, pursuing your passion, pursuing your profession. After that, now you know your disease many people have. So your duty is to cure 2 more people from your side so that we can make it as a revolution in the whole country, in the whole world. Thank you very much. The agreement is signed and it is a common mission, and in this agreement we have not made any profit motive or any profit ventures here, and we have not mentioned any clause about this. We want as much as possible people should be free from ailments, and that is the motto. With this motto we will serve the nation. A few words in Hindi and Kannada. सभी भारतवासियों के लिए मेरा परिपूर्ण नमस्कार। आप सब जानते हैं जो डायबिटीज है आज तक कभी रिवर्स नहीं हुआ, उसको कोई इलाज कर नहीं पाए हैं, चाहे वो हमारे वैदिक परंपरा में हो, जैसे ट्रेडिशनल में हम करते हैं आयुर्वेदा से, सिद्धा से, यूनानी से, होम्योपैथी से, नेचुरोपैथी, योगा, मगर तुरंत किसी ने आज तक उसका इलाज का प्रमाण नहीं कर पाए। इसी तरह से एलोपैथी में जानते हैं तो वो इंसुलिन देते हैं या मेटफॉर्मिन टैबलेट्स देते हैं या उसी के जितने भी मेडिसिन हैं, इक्विवेलेंट मेडिसिन, वो सब देते जाते हैं, मगर उससे किसी को भी कुछ फर्क नहीं पड़ा और उसको मैनेज करते गए हैं। तो एक चीज को मैनेज करना और उसके बाद उसको क्योर करना वो सही नहीं रहता है, क्योंकि उसका इम्पैक्ट हमेशा एडवर्स होता है और दूसरे अंगों में भी वो नजर आते हैं। उसके वजह से विकलांग होने का भी अवकाश बहुत है। इसीलिए हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं डॉक्टर अवधेश पांडे जी, जो ना केवल एक डायबिटीज को क्योर करते हैं पहले दिन नहीं, बिना किसी मेडिसिन के या इंसुलिन के, और इन्होंने कैंसर जैसे पेशेंट्स को भी, रोगियों को भी इन्होंने बहुत क्योर किया है। और हमारे पास मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स के लिए बहुत सारे आते हैं और कार्डियोवैस्कुलर के लिए आते हैं, और हम जब एक बार ट्रीटमेंट कर देते हैं उसके बाद उनको फिर से यहाँ पे आने की आवश्यकता नहीं होती है। बिल्कुल वो स्वस्थ के साथ यहाँ से हंसमुख के साथ वो निकलते हैं। तो मैं सभी भारतवासियों से यही मैं निवेदन करता हूँ, और विदेशों से भी जितने भी हमारे भारतवासी जो विदेश में हैं, उन सबको इस ज्ञान को फैलाने के लिए विदेश में भी मैं उन सबसे मैं प्रार्थना करता हूँ, आप सब मिलके भारत केवल नहीं विश्व को भी आप इस रोग से विमुक्त कीजिए। इसके लिए हमारे पूरी टीम यहाँ पे आपके सामने जुड़ा हुआ है, और अवधेश जी के साथ दिशा जी हैं, वो एक बड़े योगा में उन्होंने बहुत काम किया हुआ है, योग से बहुत रोगों को उन्होंने निवारण किया हुआ है। इसी तरह से यहाँ पे हमारे साथ हैं डॉक्टर वीरेश चरंतीमत जी, जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं हमारे कॉलेज के, आयुर्वेदा कॉलेज के, और ये भी रिसर्च में जुड़े हुए हैं। हमारे साथ साथ ही यहाँ पे आप जितने भी डॉक्टर्स और इंटर्न्स को देख रहे हैं, ये सब हमारे साथ रिसर्च में जुड़े हुए हैं। इसी तरह से हम ये चाहते हैं कि ये विश्व में फैलें और सबको एक अल्टीमेट रिजल्ट दें कि कोई भी बीमार है तो उसके लिए जड़ भगवान ने पहले से दिया हुआ है उस रोग को निवारण करने के लिए। तो मैं आप सबसे यही आग्रह करूंगा कि आप सब हमारे साथ जुड़ें और भारत को स्वस्थ भारत बनाएं। धन्यवाद। Few words, डॉक्टर आपके। धन्यवाद सिकंदर। एंड हमें बड़ी खुशी है, थर्ड आई आज धन्य हो गई जब स्वामी जी ने अपने मुखार बिंदु से हमें एक्सेप्ट भी किया और हमें मौका दिया
देश को, समाज को सर्व करने का। और इसी के लिए हम आज ये मीटिंग में आए हैं। हमने ये प्रूव किया कि डायबिटीज़ जैसी बीमारी बहुत जल्दी रिवर्स होती है, बहुत आराम से रिवर्स होती है अगर पेशेंट इंसुलिन इंजेक्शन पे है तब भी। ये हम डॉक्यूमेंट भी कर रहे हैं और हम प्रयास कर रहे हैं कि ये जितने जर्नल्स हैं उसमें भी जाएं और ये एक सनसनीखेज न्यूज़ भी बने। एक तो वो, दूसरा जितनी भी सिर्फ डायबिटीज़ ही नहीं, जितनी और भी बीमारियां हैं जैसे क्रोनिक डिजीज लाइक ऑटो इम्यून डिजीज है, किडनी फेलियर है, लीवर फेलियर है, कैंसर किसी भी स्टेज का है, हमारी कोशिश ये रहती है सभी में कि हम बीमारी को वहाँ पर रोक दें, रोक के यू टर्न दिलाएं और यू टर्न दिला के ख़त्म करें उसको। ये 3 फेजेस में हम चलते हैं। ये सिर्फ इस अन्नमय कोश में नहीं, हम प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश में भी कोशिश करते हैं उस पेशेंट को टच करने का, क्योंकि कई बीमारियां उसका फिजिकल बेसिस नहीं, मेटाफिजिकल बेसिस होता है। तो वहां से भी बीमारियों को जब तक पेशेंट के ऑरा से बाहर नहीं निकालेंगे तब तक फिजिकल में क्योर होके वो फिर वापस आ जाता है, जिसको हम नए नए नाम देते हैं। अगर कैंसर वापस आता है तो हम उसको मेटास्टेसिस कहते हैं, लेकिन वो ये है कि ये उसके ऑरा में से निकला नहीं है, वो बार बार आएगा। तो फिजिकल के साथ साथ मेटाफिजिकल भी हम कोशिश कर रहे हैं साधने की। धन्यवाद। स्वामी जी के गाइडेंस में हम कोशिश करेंगे पूरी दुनिया को, जितने पेशेंट्स ये देख रहे हैं उनको आह्वान करता हूं मैं, आप आइए, अपने डिजीज रिवर्स करके जाइए। और हम बहुत जल्दी यहाँ पर कई ब्रांचेस भारत और भारत के बाहर भी खोलने भी जा रहे हैं। तो ये एक फाउंडेशन बन रहा है हमारा और स्वामी जी का, हम बड़े भाग्यशाली हैं। धन्यवाद। तो जैसा स्वामी जी ने इनिशिएटिव लेके जनवरी में एक इंटीग्रेटिव मेडिसिन का इंटरनेशनल प्रोग्राम इसी कैंपस में किया था, उसी के एक्सटेंशन में वी आर हियर टू टेक अप दीज पेशेंट्स। तो हमारे पेशेंट्स कोई भी जो साउथ इंडिया के हैं, जिनको बड़ी तकलीफ होती थी कि वो देहरादून कैसे ट्रैवल करेंगे, कहाँ पर आएंगे, कहाँ पर रुकेंगे, कई बार हमारे छोटे से हॉस्पिटल में जगह भी नहीं होती है, उनको वेट करना पड़ता है, वो आके होटल में रुके होते हैं कि कब हमें मौका मिलेगा। तो उसका एक एक्सटेंशन साउथ इंडिया में, बैंगलोर में, नीलामंगला में, श्री परिपूर्णा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में हमने एक शुरू भी किया है। तो सभी साउथ इंडिया के पेशेंट्स या जो पेशेंट्स बाहर से भी आ रहे हैं, जिनको बैंगलोर एयरपोर्ट नज़दीक पड़ता है, वो यहाँ पर आ सकते हैं और यहाँ पर दाखिल हो सकते हैं, अपनी बीमारियाँ ये कर सकते हैं। ये सभी टीम जैसे ट्रेंड देहरादून में है वैसे ट्रेंड यहाँ पे है, तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ऐसा मैं आशा करता हूँ। धन्यवाद। If ideology is Dr. Avadhesh Pandey, means the script writer and the producer director is Sikandar. And similarly for me, 2 more big hands are there. In that, the prime hand is who is holding the camera. Come, Sidhu. He works 24/7 for all these projects. And next is our Teju, who always coordinate all the office works. So I thank to both of them because they are the pillars for this institution.
outset, I would like to thank Guruji. My regards to all the dignitaries sitting on the dais. I'm a radiologist and I practice nuclear medicine. And the PET CTs that you have heard of in cancer patients, I do the PET CTs. Apart from that, I'm practicing integrated medicine and healing and curing people. What is the need for integration? Has the system disintegrated? So you need integration of that system? Yes, it has. I'll show you how with one example. You know that heart is a pump. How many people know heart is a pump? Yes, so most of the people know heart is a pump. If you know that heart is a pump, then you don't know the heart. I will tell you what a pump is. A pump pumps blood and sucks it back. Suppose if heart is a pump, in 1 minute's time, you know how much blood is pumped out? One pulse is one heartbeat. One pulse is one heartbeat. In one heartbeat, the heart pumps 70 ml of blood. How much? 70 ml of blood. 70. In one pulse. In 1 minute, there are 72 pulses. Approximately 72 pulses. So in 1 minute's time, how much blood will be pumped out of the heart? 70 into 72. That comes to around 5 liters. 5 liters of blood is pumped out of the heart in 1 minute time. It's pumped out and it is sucked back. What is the distance? Blood travels through blood vessels. If I look at the arteries, the arterioles, the capillaries, the venules and the veins, and if I put them one after the other, it will be 1 lakh kilometer. 1 lakh kilometer. In 1 minute's time, a fluid called blood is pumped out of the heart and comes back to the heart, traveling 1 lakh kilometers. Now, show me a pump that mankind has ever made that can pump water for 1 kilometer and bring it back in 1 minute's time. Can you do that? Can anybody do that? So if you think heart is a pump, that is not the right thought process. Heart is a pump, all right. There is a lot of divinity. If you don't see divinity here, that pumping 1 lakh kilometers of blood. Blood is not water, please. It is a viscous fluid. It is a viscous fluid. If it is pumped and brought back in 1 minute's time, do you still feel heart is a pump? There is much more to that than what meets the eye, which is why the cardiologists, the cardiac surgeons, with due respect and regard them, they might be doing very big things, but one thing that they forget is heart is merely a pump. Now I'll show you how the heart functions. Suppose if you get a thought process, if you get a bad news, your heart starts vibrating like this. It starts pumping very fast. So what influences the heart? Your thought process, isn't it? Isn't it? Yes, sir. Now, if you start jogging, your heart will start pumping more. So it does not only depend upon the pumping of the heart, that is what people think. It also depends upon your mindset, the place you are in, the kind of environment that you have, your exercise, the motion that you undertake, that is your motion, the motion of the earth, the motion of the cosmos, and so many other factors. The contribution of heart as a pump is just 15%, 15%. So if you are doing angioplasty, bypass surgery or things like that, that you are doing only in 15%. What I am saying is, if that whole thing is diseased, and if you take care of 85%, that 15% becomes negligible. This is the need for integration. Thank you very much. Thank you very much, sir.
Now, I would like to request Dr. Raghuvansh Mani Pandey sir to address the